My name is Pratima. So basically, we deal into study abroad immigration services, and also we do domestic services as well, wherein we support students to search for their good colleges. So we started this company 12 to 14 years back, wherein we were doing only domestic operations. So in domestic, we were giving them options of elite colleges on management quotas and few domestic services as well. Then later on, we found that the Pune Bombay crowd is more interested in going abroad. But then abroad comes with its own responsibilities as well. The fees are so high of top notch universities, and there were so other factors also in terms of visa and everything. So we thought a middle way that we should work out कि जो top notch crowd है हमारे इंडिया का जो बहुत talented है, so they are not getting good opportunities because they don't come from that wealthy family. Right. So we started searching few universities, which can give scholarship, and there are so many things we were trying hard for that. And suddenly this Italy idea came to us from few of the people, from few of the citizens of Italians as well. So there we got this idea of free education. So wherein we started this project of giving free education. This sounds good to be too true, but then yes it is. आपको सब कुछ इधर फ्री मिलता है. Your tuition fees is going to be completely free. Also you are paid for your living cost. सो गवर्नमेंट आपको सिर्फ पढ़ा नहीं रहा है. आप अगर आप आ गए तो वो बच्चा पैसे कहाँ से लाएगा. तो उसके लिए लिविंग कॉस्ट भी वो फ्री दे रहे हैं. सो दिस मॉड्यूल वी स्टार्टेड बैक 6-7 years and initially it was very hard to convince student कि हाँ ये ऐसा होता है. So it was very hard for me कि explain करना कि ये free है, ऐसे होता है. So initially we kicked down only 5-6 leads. सिर्फ 5-6 बच्चों को हमने बहुत अच्छे से prepare करके भेजा. And now we are at this age कि 500 से ज़्यादा बच्चा एवरी ईयर माई कॉलेज खोज से जाता है सिर्फ फ्री में पढ़ने के लिए. एंड वी हैव टू टेल स्टूडेंट्स कि अभी इस साल क्लोज हो गया है. सो दिस वे वी आर बिल्डिंग द एनवायरनमेंट ऑफ ओनली गुड स्टूडेंट्स. बट देन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि बच्चे ने बहुत अच्छा होना चाहिए. दे हैज़ टू बी टैलेंटेड, एंड इफ ही इज टैलेंटेड इन टूडेज एरा ऐसा कुछ है ही नहीं कि आपके पास पैसे नहीं हैं, अगर आपके पास बजट नहीं है तो आप बाहर पढ़ने नहीं जा सकते हो. इनफैक्ट आप इंडिया में भी उस बजट में नहीं पढ़ सकते हो टॉप नॉच में. what we are giving top QS ranking universities, we are giving public universities, we are giving यूनिवर्सिटीज़ लाइक एप्पल का एप्पल ने जिसका लैब सेटअप किया है, नेपल्स फेडरिको 2, यू कैन जस्ट चेक ऑन ट्विटर ऑल्सो, वेयर इन द टिम कुक इज सेटिंग एवरीथिंग इन द लैब्स ऑफ डेटा साइंस. तो उस यूनिवर्सिटी में हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में. खाना पीना रहना पढ़ाई सब कुछ उसका फ्री है. ऑल्सो वी हैव स्टार्टेड दिस ईयर, we started a concept of international dual degree, wherein the student will study first year in Italy mandatory, and second year he can go to any country of his choice. We have done MOU with USA universities, we have done with Germany, we have done with France, and वो सेकेंड ईयर भी उसको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगा. ऐसा नहीं है कि उसको उस कॉलेज का फीस भरना पड़ेगा. So we have students, I would mention few names like Sara, like Achal, wherein they are studying in Grenoble, which is like heart of Europe, the top notch university of Europe. वहाँ पर वो फ्री में पढ़ रहे हैं. wherein अगर दूसरे students जो हमारे थ्रू नहीं हैं, वो सेकेंड ईयर अगर वहाँ पे पढ़ रहे हैं तो दे आर पेइंग अ फीस ऑफ 35 लाख रुपीज़, wherein our students are studying it for free and they are enjoying all the benefits as a French student or maybe as an Indian student who have directly taken admission. Right. So this we have introduced extra this year which we are promoting so much. राइट. तो आप हमें इस प्रोसेस के बारे में थोड़ा बता सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या होता है, और हम इतने सारे स्टूडेंट्स को ईयरली बेसिस पे बाहर इतना टॉप क्वालिटी एजुकेशन देने के. Yes, it is difficult to manage. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. Yes, it is very difficult to manage, but then yes, we have expert team of all the application process, scholarship process, and visa, which is very critical. Right. So we have a separate team of visa which we personally see, and scholarship also, it is very critical. So that is also managed. But then yes, if we talk about how do we do that, so we have several steps. So we have 3 steps. Initially, when the lead is closed, then he is paying 50,000 initially at the time of application process. Then we create a unique ID of each student, and then from the unique ID we do the application process and documentation process of each university. Right. So we have our own portal as well, we have our own process as well, and plus university के भी अपने process है. So depending on the mutual decision, we do that application process. Once the offer letter comes, which we mostly guarantee कि offer letter आ ही जाता है सभी बच्चों का. So once we have this offer letter in place, we apply for the scholarship of that particular region.
So now Italy has basically many regions, like we have in Maharashtra, we have Lonavala, we have Pune, we have Mumbai. So there are different regions. PMC हम जिसको कहते हैं या PCMC हम जिसको कहते हैं. So वैसे regions इटली में भी हैं. So for example अगर बच्चे को सापेंजा से ऑफर आ गया है and he wants to go to सापेंजा, then we do the scholarship of that particular region. Right. And once the scholarship is granted, the third process is to file the visa. So then the third process happens wherein we are filing visa of a student depending on his financial capabilities, which is very easy for us, but then yes, it takes a lot of time and a lot of efforts to file a visa. And we can proudly say that we have almost highest percentage of visa, at least in Maharashtra or maybe in India. Maybe I have not done those research yet, but yes, 99.99% visa सारे हो जाते हैं. 99% you can consider the visa success rates are, and we are striving hard to make it 100% this year. That's so good to hear. Yeah. Another thing I want to talk about, get some information about is how much does it usually cost, this entire process? How much should a student be prepared to, put down for this entire... So basically our process cost is 1.50 lakh rupees, which is 1.5 lakh in Hindi. So he has to keep this 1.50 lakh process cost, which would be given to us into 3 installment. Initially 50,000 at the time of application process, 50,000 ऑफर के बाद एंड 50,000 वीजा के पहले. So ये इस बच्चे को हमें देना है 1.5 लाख का. Apart from that, he has a visa fees of 8 to 9,000 rupees, which he has to directly give it to VFS. And the second costing is of insurance. Around 5-6,000 इंश्योरेंस का हो गया. Thirdly, उसकी फ्लाइट टिकट्स वो भी उसको ही करनी है. सो स्टूडेंट वीज़ा पे हार्डली द फ्लाइट टिकट वुड कॉस्ट हिम 25,000 to 23,000, डिपेंड वो कब कर रहा है फ्लाइट टिकट्स. सो फ्लाइट टिकट उसको करना है. देन आपको जब इटली आप जाते हो, व्हेन यू अराइव इन इटली, यू हैव टेकन योर वीज़ा, यू हैव टेकन योर फ्लाइट्स, इंश्योरेंस हो गया, वीज़ा भी आ गया. व्हाट आफ्टर दैट? आप जैसे ही वहाँ पे जाओगे, आपको आपके स्कॉलरशिप के डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, आपको आपका बैंक अकाउंट ओपन करना होता है. देयर आर 2-3 मोर प्रोसेस दैट द स्टूडेंट हैज़ टू डू, बट देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज योर बैंक अकाउंट, बिकॉज ये जो स्टाइपेंड का अमाउंट है ये दिसंबर फर्स्ट वीक में आपको मिलता है या समटाइम्स दिसंबर सेकेंड वीक में आपको मिलता है. सो नाउ व्हाट अबाउट दोज 2 months, बिकॉज आप बैंक अकाउंट ओपन करोगे, उसका अपना एक प्रोसेस है 1 month का. सो वो 2 महीने का सर्वाइवल कॉस्ट अराउंड 1 लाख and 1.5 lakh रुपीज़ बच्चे ने कैरी करना चाहिए. सो वेन एवर द स्टूडेंट कम्स टू मी फॉर काउंसलिंग, आई यूज टू टेल हिम कि पूरे साल भर का आप एक 3 लाख का बजट रखो. 1.5 आपने हमें दे दिया, 1.50 यू हैव गिवन अस एंड 1.50 यू कीप विद अस, जिसमें मैंने आपका फ्लाइट टिकट भी डाल दिया, इंश्योरेंस डाल दिया है, एकोमोडेशन 2 साल का डाल दिया है. So everything would be managed in this 3 lakh rupees. That's sufficient, I think so. Yeah. Right. So in any other products that we have that maybe like a work permit or work permit to different countries. Yes. Is that also something? Yeah. That So that's another module we have that we've started 2-3 years back. Also the work permit, immigration. So now we have immigration work permit for Malta, which is again a European country. Then we have work permits for Thailand. We have work permits for Maldives. We have work permits for Hong Kong also. So that's a separate module we have. Mostly we focus on study visa, right, because study visa is cheaper. 1.50 lakhs में बच्चा पहुंच जाता है, and he will also have the same benefits the person will have for Malta, because Malta का process cost is little on a higher side. It's 5.25 lakh rupees. So हर स्टूडेंट का या हर कैंडिडेट का उतना 5.25 लाख का बजट नहीं होता है, बट 1.5 लाख मोस्टली मैंने स्टूडेंट्स को देखा है वो खुद अपनी सैलरी से ही अरेंज कर लेते हैं. 1.50 lakhs in a year he has to pay, because this installment happens in 2 to 2 months. So almost in a year he has to repay this 1.50 lakh rupees, which is not a big thing for students who are working in Bombay, Pune, Nasik, Nagpur. Maharashtra के बच्चों के लिए उतना प्रॉब्लम आता नहीं है. Right. So we focus more on study abroad. Immigration also we have, again the costing is 5.25 lakh rupees, in which directly हम आपको जॉब पे भेजते हैं with a work permit in Malta. एंड थाईलैंड एंड हांगकॉन्ग भी हमारा अभी चालू है, जिसमें हमने स्टूडेंट्स को भेजे हुए हैं. सो उसका भी 20 days का प्रोसेस है. द कॉस्टिंग इज समवेयर नियरली अबाउट 3 lakh rupees. Right. Yeah. So lastly, what is something that you would want to tell aspiring students who really want to go abroad? Maybe some tips or maybe some guidance, because you've had years of experience doing just this. Yeah. So some encouraging words, something to look forward to for See, students. more I am upset on the situation that people first they are not aware of this thing that कि हाँ ये सच्ची में free है, and when they come to know कि हाँ ये free है, they really don't trust. So first they have to do their own research. So every student if I talk about and when they call me कि मैम ऐसे कैसे हो सकता है, so we can't say ना कि हाँ ये ऐसे है. आपको आपका research करना चाहिए. There is a very big tool Google.
You can Google everything. Everything is posted कि हाँ ये है free. This happens. How this happens. So they should do this research. And also I tell to every student, मेरे पास USA UK के भी बहुत सारे बच्चे आते हैं. When we talk them about this, when they come to know कि अच्छा मैं USA में भी free of cost में पढ़ता हूँ, तो वो बच्चे भी इटली जाना चाहते हैं. मार्केट में मुझे सब बच्चे बोलते हैं मैम इटली तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं जाता है, बच्चे USA UK जाते हैं बिकॉज दे डोंट नो कि अच्छा ये है. वंस दे कम टू नो कि हाँ ऐसा भी होता है, सो आई एम श्योर UK USA छोड़ के बच्चा बहुत ज़्यादा इटली जाएगा. एंड दैट्स ऑल आवर फोकस इज एंड दैट्स ऑल आवर मोटिव इज कि आप चीपेस्ट में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखो. USA में 60-70 लाख रुपीस लगाने के बाद भी बच्चे को उतना पैकेज मिल जाएगा जो एक इटली के स्टूडेंट को भी मिल रहा है. I have students who've got 32 lakhs package. I have a student, she got in Germany 62 lakhs का package. तो अभी तो वो तो 1.5 लाख में ही पढ़ के गई है and she has 62 lakhs package after 2 years. USA में बच्चा 1 करोड़ 60 lakhs लगा रहा है और अगर उसको भी 60 lakhs का पैकेज है तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट किसका ज़्यादा है. And you have the best benefit here is a Shenzhen visa. Today, if you want, you can work in France. Tomorrow, you want, you can go to Germany. You can go to Sweden, Latvia. There are many countries options available. Right. But then those options are not available in other countries. You have been restricted yourself. अगर आप UK जा रहे हो, लंदन के अलावा और कुछ नहीं है. If you're going to USA, you have IT jobs mostly in New York or maybe the surrounding cities. Right. So my basic message to everyone is to do a research, do a survey, do a comparison on return on investment. एट द एंड ऑफ द डे UK वाले बच्चे को भी जॉब मिलेगा, USA वाले को भी मिलेगा, इटली वाले को भी मिलेगा. ऐसा कुछ भी नहीं है दैट आप इतना कम खर्चा करके जा रहे हो तो आपको अच्छा नहीं मिलेगा, बट देन ही इज स्पेंडिंग 60 लाख रुपीज तो ही विल गेट समथिंग वेरी गुड. इट्स नॉट लाइक दैट. Over my experience, I have seen after 5 years, everyone is on the same bench. It's just country matters. But then, if you see Europe, the living standards, everything is so natural and it is so better. Right. Once a student will visit Europe or maybe a student will visit USA, I'm sure he will love Europe more, considering the lifestyle, considering the natural things they have done, and less immigrations. Still, they have their own people in Europe. Yeah, it's not like USA, Canada that every second student is Indian. Right. So you have more international feel there in Europe. Right. Yeah. Okay. So thank you for that. Yeah. Thank you so much.